All right, so be ready to present. Who will initiate? You. Okay, you're visible here and your screen is visible here. Got it. Chalo. Start. Good afternoon and good afternoon to all. I am Rishabh. We are here to present genetically modified crops, and we all present content list. Abstract introduction. Why should we not consume genetically modified food? And conclusion. Here there is 2 points: abstract and introduction. I present, and third, why should we not present? Why should we not consume GM foods? Presented by Ankit, and third, conclusion by Sanskar. Like, firstly, we discuss about what is genetically modified foods and what is genetic modification. Let's understand what is genetic. Genetic, which is belongs to DNA, that is not exactly full DNA, but it is a unit of DNA that's called gene. And modification. Modification is limited change of something that is called modification. And I'm here to discuss genetically modified crops. Genetically modified crops means changes in crops genes through biotechnology, inserting DNA from one crop to another. That is genetically modification. Introduction of genetically modified products. Now, what is introduction of genetic modification? First, genetically modification organism was developed in 1973, which is developed by Harvard and Stanley Cohen on bacteria from one bacteria to another. And after that, 1983, GMO product approved by USA in 1983, FDA means Food and Drug Administration, and which is approved to develop human insulin for diabetic patients. And after that, first genetic modification plant was produced in 1983 using antibiotic resistant tobacco plant. China was the first country to commercialize transgenic crop in the early 1990s. With the introduction of virus resistant tobacco in 1994, the transgenic flavor Sir tomato was approved by the Food and Drug Administration marketing in the USA. In 1995, few transgenic crops received marketing approval. And I would like to invite Ankit for further details on next topic. Thank you. Question is why should we not consume genetically modified crops? First one is harmful effect. There is the biggest threat caused by the genetic modified crops. Genetically modified crops, that is the biggest threat. Increasing the risk of when we eat. There is some risk like cancer, infertility, and many more. Second is toxin in plant. Toxin plant. Genetic modification. Genetic modification. Genetic modification
Third one is environmental harm. Damage to the environment can affect the human health by the climate changes. Look at this picture. They all are genetically modified foods. That is potatoes, apples, strawberries, banana, corn, cotton. These all are genetically modified foods. For the next slide, I would like to focus. The conclusion is one is about genetically modified food has the potential to solve many of the world hunger and malnutrition problems. It means that modified foods modified foods to grow the those food who use food crops without using chemicals, then with any benefit, then then it can be solve the hunger of every individual person and the world. And the second one is also to help protect and preserve the environment by increasing dirt and increasing reliance upon chemical pesticide and to if we protect the environment, it means we don't have to use chemicals and other things because we damage the soils and the environment. Then it can become good for us. We have to go for the natural way. Thank you so much. Yes, third with it first. In the meantime, that I'm doing speaking, we can set up here. All right, are you prepared? All right. In the meantime, I'm giving you the review for the previous book. आप लोगों को पता है आप लोग क्या present किए हो? ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है. See, the thing is, what you are doing, you're writing all the contents on the slides again. I have already told you, do not write all the content on the slides. Mention it using the photos. आप उसमें फोटो मेंशन करिए उस चीज का. आप उसमें जैसे आपने जो इमेज क्रिएट किया था, ठीक है, ये सारी इंट्रोडक्शन में इसे करना था. नहीं, वो सारी चीजें ठीक है. इंट्रोडक्शन भी आपने जो किया ना, उससे रिटन फॉर्म को छोड़कर एक ही पॉइंट या दो ही पॉइंट लिखते हैं एंड इन द मीनवाइल आप यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं. नहीं, तैयारी क्यों नहीं हुई? तैयारी इसलिए नहीं हुई कि आप रट रहे हैं. वही बताया कि तैयारी करना, जो प्रेजेंटेशन करना, मैसेज किया था. ऐसे क्यों लास्ट मिनट पे चेंजेस हो रहे हैं बच्चे, ये बताइए. चेंजेस नहीं वो सुबह बताया कि प्रेजेंटेशन में तैयारी कर लिया, उसके बाद यार स्लाइड्स तो पिछले ही बार कंप्लीट हो रखे थे. हाँ, तो नहीं, if you have prepared the slide, you need the content for that. That means you had the content. Why not give your teammates to prepare? ठीक है, ये लास्ट मोमेंट वाले जितने प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो यही चीज में प्रॉब्लमैटिक क्रिएशन हो जाता है. प्रेजेंटेशन का पीपीटी था, वो ग्रुप में भेज
सेंड कर दे यार नहीं तुमको बच्चे लास्ट में किया ना, नहीं एक दिन पहले किया बच्चे एक दिन में नहीं होगी ये प्रिपरेशन पीडीएफ की या प्रेजेंटेशन की या स्पीच की. You need, see, if you are writing a speech, I have already told you in a class, अगर speech presentation दे रहे हो कम से कम minimum you have to read your speech 15 times minimum. तो आपने जो स्लाइड प्रिपेयर किया है, प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन देने में आपका आधा ध्यान स्लाइड पे रहता है. यही रीजन है कि आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है. स्लाइड आपके लिए नहीं है, स्लाइड उनके लिए है जो सुन रहे हैं. आपको बस डाटा डिलीवर करते जाना है. ठीक है, आई विल गिव लेट मी डू दैट. यहाँ पर जो रिव्यू दे रही हूँ उसके बाद अभी आज ही मैं आपको एक लिंक भेजूंगी. ठीक है, दैट इज अ प्रेजेंटेशन और यू कैन से इट स्पीच भी बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं. टेडx का एक मैं वीडियो भेजूंगी. उसमें वो पर्सन जब प्रेजेंट कर रहा है पीछे बैकग्राउंड में स्लाइड्स चेंज कर रहे हैं. वो पर्सन उनके हाथ में मॉनिटर होता है एंड दे आर चेंजिंग द स्लाइड्स कंटीन्यूअसली एंड दे आर स्पीकिंग कंटीन्यूअसली आल्सो. वो कभी पीछे मत पलट के देखते नहीं. वो चीज एक बार देखिए. ऐसा नहीं कि आपको एक बार में अचीव कर लेना है, लेकिन उसको दिमाग में रख के अपना इंप्रूवमेंट करिए. ठीक है ना. कंटेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, कंटेंट याद नहीं रह रहा है, वो तो दिक्कत होगी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे. कम से कम इसीलिए मैंने 17 को बताया और 24 को 28 को मैंने 26 को लास्ट डे. आई हैव गिवन यू मच मोर देन इनफ टाइम टू एटलीस्ट प्रिपेयर द कंटेंट एंड गिव योर टीममेट्स इनफ टाइम टू प्रिपेयर. उतना टाइम लगता है बच्चे, कम से कम 4 से 5 दिन लगता है आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने में. और ये जब आप सिर्फ एक क्लासरूम लेवल का एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में बनाएंगे, उस दौरान आपको 3 महीने 4 महीने एक प्रेजेंटेशन बनाने में लग जाते हैं. ठीक है, उस प्रेजेंटेशन का जितना डाटा है, जो जिसने उतनी मेहनत की है वही ना दे पाएगा प्रेजेंटेशन पे. सो इफ एनीवन एल्स इज गिविंग द प्रेजेंटेशन, यू नीड टू डिलीवर दैट डाटा कंटीन्यूअसली टू दैट पर्सन. ये टीम वर्क करना सीखिए. ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी टीम में अगर कोई आपको क्रिटिसाइज ना करे या आपको लास्ट में कोई डाटा ला के दे दे तो वो प्रिपेयर कर लेगा, उसे बस रटना है या उसे याद करना है, तो ऐसा नहीं होता है. इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते जाइए, साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते जाइए. जैसे ही स्लाइड तैयार हुआ, स्लाइड का इमेज भेज दीजिए कि तुम्हें ये 2 स्लाइड्स अपनी प्रिपेयर करनी है, ये इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से है, तुम्हें कुछ ऐड करना है तो ऐड करो. ये रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी है, रिस्पांसिबिलिटी बांटना सीखो. यू कैन नॉट डू एवरीथिंग योरसेल्फ. आप खुद से सारा काम नहीं कर सकते हो. ठीक है, यही प्रॉब्लम हो जाती है. टीम वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप रिस्पांसिबिलिटी डिवाइड करें. ठीक है, पीपीटी बनाना भी एक बहुत मेहनत का काम होता है. आप बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेजेंट नहीं करोगे, या आप प्रेजेंट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बनाने में हेल्प नहीं कर सकते हो. ठीक है, एवरीथिंग नीड्स टू बी कोऑपरेटेड. और ये चीज कोऑर्डिनेशन जहां दिक्कत होती है वो यहाँ दिखाई देता है. अंडरस्टूड. मैंने कल भी आपको कहा था प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा लग रहा है. द ओनली थिंग दैट यू डिड नॉट करेक्ट दैट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट. जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इतने सारे जो डेट्स एंड नेम्स इंक्लूड कर दीजिए, वो थोड़ा टीडियस हो गया, तो वो जरूरत भी नहीं है जानने की. ठीक है, आपका टॉपिक था इतना कि क्यों हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं खानी चाहिए. ठीक है, तो आप बस उनको रीजंस गिनवाइए. ठीक है, कि क्यों क्या क्या नुकसान होते हैं, और बहुत बेसिक लेवल पे समझाओ ना. जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाता है, ठीक है, मार्केटिंग का कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, तो आपको किराना स्टोर का कभी एग्जांपल दे दिया मैम ने, या गुड्डे का एग्जांपल दे दिया. ठीक है, कुछ ऐसी कंपनीज जिनके बारे में आप जानते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास बेस नॉलेज ऑलरेडी है, तो जब आप प्रेजेंटेशन देते हो आपका प्रेजेंटेशन उसी तरीके से रहना चाहिए. ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन में डाटा जो भी आपको स्लाइड पे जो भी लिखना है लिखो. एक 3 पॉइंट्स में करके लिखना है, टफ लैंग्वेज में लिखना है, लिख दो. लेकिन जब समझा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, वो जितना सिंपल रखोगे, जितना आप आसान भाषा में रखोगे, उतना ज्यादा अच्छा. ठीक है, ये सारी चीजें सबको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से. ऑलराइट, डन. चलो प्रेजेंटेशन का करना ही है, वही सारी चीजें अगर आप करोगे ना, चीजों को मिला के करोगे. हाँ, एक बार और चीज, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब तुम प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है कि स्लाइड यहाँ तक दिख रहा है ऑडियंस को, इससे आगे नहीं जाना है. दिस स्क्रीन शुड नॉट बी ऑन योर फेस.
यहीं तक रहना है और पलटना नहीं है. You are not reading from slide. Slide is for them. यहीं पर ऐसे खड़े होके जो इमेज दिखाना है you can see on the screen. इतना ही रखना चाहिए तुम्हारा प्रेजेंटेशन. इससे ज्यादा पलटना नहीं है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है. जितना स्टेबल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा. ठीक है. Go next. Next से बाहर. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, my all friends. Today I am going to giving you presentation, and my topic is the power of color and meaning. Here are three members in my group. First me, second Sanjay, Shreya, and third Divya. I am giving the overview about color psychology, and Sanjay will giving the overview about different types of color, and Divya will giving overview about symbolism of color. So let's start. First, power of color. Power of color is play a very important role in marketing. If we look at numerous of brand, companies, and logo, they follow a different types of color in their logos. There is a reason why they attract customer and they increase their sales and branding their product for using different types of color. Every color has unique personality and unique psychology behind this. If you take the example of red color indicates power, passion, and energy. It's an attention seeker. If you take example of mall, there is a mall. If they want to increase their sales, then in the center there is a red color reflect. It's reflect the attention. And if you take example of notifications in our phone, WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, they all are the notification of red. Why this is red? Because attention is going to people behind this. If you take example of some another apps, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, HP, messengers, they show their logo with a color of blue, and blue color shows the strength. Blue color shows the reality, trust. It builds a human brain in a by psychology. They build a something create. It's related to trust. If you take example of some food related brand, for example, Pizza Hut, Burger King, KFC, their logos are related to red and yellow, and red and yellow color attracts people. Red and yellow color, combination of red and yellow color, in research it found that it increases purchaser spontaneously. It means immediate, and it means that they stimulate hunger. That is the reason why their logo is the combination of red and yellow. And for further details, I would like to send you. Good afternoon, everyone. Thanks for giving the opportunity. And let's move to the next slide, that is the meaning and type of the colors. As all what being said by Kusi, branding and the social media and social dilemmas, color impact on the viewers and audience. What color signifies? It's all about its background colors and the warm and cool color. Here are basically all the colors on the color wheel presented in this slide.
that is divided into two parts, that is warm colors and cool colors. Warm colors basically signifies as red, orange and yellow. That is representation of outgoing and demand attentive. And the cool colors are generally known as blue, green and purple. That is shown as the background. In the PPT form, when we present and wanted to present a PPT, we should have to put a cool color in the background. That is so soothing and just eye catching. And generally the color synchronizes in the visual mode that can have also big impact on the viewers, as we can perceive that according to the color psychology. And generally here are, and let's move to the next slide, types of colors. Basically there are three types of colors: primary colors, secondary colors and tertiary colors. Primary colors are generally known as red, yellow and blue. And when we mix primary colors simultaneously, red to blue and yellow, that we can find that secondary color. And after that, we added one by one of the secondary color, we can get tertiary colors. And there are also the subset of colors, that is complementary, triad and tetradic. Complementary colors are those colors which are also combined with secondary and tertiary colors. And tetradic colors are those colors who are presented in the color wheel just in the triangle symbol. After mixing the triangle, we can find the triad colors. In the tetradic form, we can find that after adding rectangular form and triangular form colors, we can also get tetradic colors via these color wheels. And the next slide is, we generally mix the primary colors, that is red, yellow and blue. After mixing red and yellow, we can get that orange color. And after adding yellow and both blue, we can get green colors. And if we mix blue with red colors, we can find violet colors, purple color. And the next slide will be presented by Divya Dev, that is color symbolism. And thanks a lot. I am going to give a presentation about the color of symbolism. What is color of symbolism? What is color of symbolism? Color of symbolism is the use of color or representation of meaning of something that is usually specific to a particular culture and society. Context, culture and time are certainly important factors to consider when thinking about the color symbolism. Now, the color red can symbolize light, energy and determination, danger, strength and power, patience and love. And the color orange can symbolize light, happiness and attraction, and and the color green can symbolize life, growth and nature, and
freshness and fertility, safety and hope. And the color blue can symbolize like trust and confidence and truth, and the color yellow can symbolize like joy and happiness, and the color purple can symbolize like and the color black can symbolize like evokes strong emotion, fierceness, irresistible emptiness, and the color white can symbolize like project purity, clean lines, and neutrality, and its mental clarity. Thank you. What's the time? What's the ऐसा कुछ इशू था तो आप पहले आके बता देते नहीं आप मैसेज किए थे टॉपिक चेंज करने के लिए तो मुझे नहीं लगा हाँ तो उसी टॉपिक पे देना है नहीं उनका इशू था उनकी एक टीममेट का तबीयत खराब था वो मेरे पास आई थी 2 घंटे पहले आई मेरे पास बोलने के लिए वो बच्ची आपके लिए यहाँ बोलने के लिए टॉपिक चेंज करवाने के लिए टॉपिक नहीं चेंज होगा वो मैं बता दूंगी ठीक है अगर नेक्स्ट क्लास प्रेजेंट करोगे तो -5 करके मैं नंबर दूंगी दैट इज अप टू यू या तो आज प्रेजेंट करिए या फिर -5 करके मैं तीनों का नंबर -5 करूंगा नहीं वो टीम वर्क वैसा ही होता है बच्चे एक का नुकसान मतलब तीनों का नुकसान ठीक है यस हाँ यस क्या नाम है बच्चे आपका यस खुशी एंड दिव्या एंड संजना फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज वर्क इन टीम बच्चे ठीक है मेरे को पता है लड़ाइयाँ होती हैं हर किसी की होती है मैंने बहुत लड़ाई करी है अपने टाइम में ठीक है दैट इज कॉलेज लाइफ ठीक है लेकिन उसका आपके वर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ठीक है whatever disagreements you have you should keep it to yourself into your team and that should not show it here ठीक है ये जो एक स्टेज होता है ना ये स्टेज एरिया ये फीलिंग्स ये इमोशन शो करने के लिए नहीं होता यहाँ नहीं करना है ठीक है सेकेंड ऑफ ऑल Khushi right yes your presentation was very good PPT I had not accepted it like the idea which I had when I gave you this topic was not what I expected like you introduce it into something in marketing which I didn't have that mind ठीक है मेरा जो mind था कि कलर्स का क्या importance होता है वो psychological था probably but आपने marketing में इसको introduce करके I like literally I am mind blown how you have presented it second of all presentation आपका थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हुआ because you were keep looking at the slides वो नहीं करना बस बाकी सब was very energetic it was very presentable and the initiation should be
of your presentation, of your speech or your debate is very much important. उस 1 मिनट में अगर इंट्रोडक्शन एनर्जेटिकली नहीं होता है तो ऑडियंस को एनर्जाइज नहीं कर पाते आप. ठीक है, आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, आपका प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा हो, इंट्रोडक्शन जब तक अच्छा नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं आएगी ऑडियंस में. ठीक है, यस. Sanjki, a little bit problem with your pronunciation. Other than that, आपकी वॉइस का प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं. आपने करेक्टली प्रेजेंट किया है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस था लेकिन वो धीरे-धीरे चला जाएगा. नहीं, वॉइस का कोई दिक्कत नहीं. वॉइस का कंटिन्यूअसली आपका मैंने बोला ही थी, थोड़ा धीरे आप बोलते ही हैं स्टेज पे आने पर. यस बच्चे, आप धीरे बोलते हैं, वही चीज मैं बोल रही हूँ. When you come up here, every time you present, whether it is a speech, whether it is a presentation, it is a little bit slower. Your voice gets little bit slow. ठीक है, वो शुरुआत में नहीं दिखी थी इसलिए मैंने पॉइंट आउट नहीं किया. जब आपने पहले 2 स्पीचेस प्रेजेंट किए थे क्लास में, उस टाइम मुझे ये नोटिस नहीं हुआ. उस टाइम योर वॉइस वाज लाउड एंड क्लियर. बट अभी 2-3 बार से जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वॉइस थोड़ी धीमी हो जाती है यहाँ पर आकर. सेकंड थिंग, अ लिटिल बिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन. 1-2 वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करिए, बाकी आपका ठीक है. Yes, Divya. Again, pronunciation problem. Little bit, not much. You can work it around here. ठीक है, वो धीरे-धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा. उस पे थोड़ा सा वर्क करिए. Again, कंटेंट अगर भूल जा रहे हैं, वो आपको पता है ना कि आपने लिखा है पूरा. जरूरी तो नहीं कि इनको पता है कि आपने सबके बारे में बताना है. अगर कुछ छूट जाता है, उसको भी जैसे मैंने बोला, अगर कुछ छूट जाता है, आगे बढ़ जाओ. ठीक है, do not wait the point where you can remember. उससे क्या होता है, ब्रेकेज आ जाता है, उससे ऑडियंस डिस्टर्ब हो जाती है, अच्छा नहीं लगता उनको. कंटिन्यूअसली बस चलते जाना चाहिए आपका डाटा. ठीक है, ऑलराइट. ओवरऑल आई थिंक योर्स टिल नाउ योर प्रेजेंटेशन वाज द बेस्ट वन. ठीक है, आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दैट. चलो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर ले रहे हो कि तुम्हारा अच्छा नहीं था, वो भी बहुत बड़ी बात है. बट स्टिल आई वांट योर इंप्रूवमेंट. एंड अगेन, यस, द 2 groups who are presented earlier, Suyesh group and Sachin group. आपने स्क्रीन पे देखा यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट करने से क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, वो इसीलिए मैंने कल कहा था कि आपका सिर्फ यहाँ पर इश्यू टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा बैकग्राउंड की थोड़ा सा ब्राइट कॉन्ट्रास्ट में रखेंगे तो अच्छा लगेगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट टाइम आई वांट मच बेटर. एनीथिंग एल्स? यस, आपका प्रेजेंटेशन next class Saturday. Yes. But the power of color, I thought only psychological, which you move forward with this. ठीक है, आपने आगे की स्लाइड में वही बताया है, but I did not expect it from a marketing point of view. Like, I am not a marketing teacher, so I didn't expect that kind of data from you to come. But it was very nice revelation. कि इसको सही बात है क्योंकि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में ये सारी चीजें यूज होती हैं. एंड इट इज एक्चुअल, द डाटा दैट यू हैव प्रेजेंटेड, दैट वाज वेरी मच ट्रूथ. ब्लू इज अ सूदिंग कलर, ग्रीन इज अ सूदिंग कलर, रेड अप्रिशिएट. इफ यू लुक एट द विक्टोरियन एरा, अगर आप विक्टोरियन एरा में देखते हैं तो उनके जो डाइनिंग रूम हुआ करते थे वो रेड कलर के हुआ करते थे, बिकॉज रेड कलर इनिशिएट कॉन्वर्सेशन. वो एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है जहां पर लोग आराम से बात कर सके, और सही में जिनको येलो कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन में भूख लगती है. दैट इज व्हाई डाइनिंग रूम्स वर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ सन. इट वाज ऑलवेज इन द ईस्टर्न साइड, सो दैट मॉर्निंग के या आफ्टरनून के जो उनके मील्स हुआ करते थे वो बहुत जॉयफुल, एंड इट वाज इन द क्लोज निट फैमिलीज. एंड उनका जो डाइनिंग द एरिया वेयर दे कैन मीट, ग्रीटिंग एरिया, या आप कह दीजिए उनका what was the drawing room. Yes, all those rooms were either green, moss green, or olive green, or blue, all the shades of blue. So actual all the data that you have presented, I don't find any fault in that, but I have never expected it to grow at that level where you will introduce it into a marketing aspect. That was a very good move from your side. Okay, also you could have also introduced that. आप भी उस चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बिकॉज जितने भी टॉपिक थे, नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट ऑल द टॉपिक कुड हैव टेकन एंड टर्न फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. आपका गेमिंग जो था उसमें एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड किया जा सकता था, हाउ गेमिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू द पब्लिक और द चिल्ड्रंस. एंड आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए भी आप यूज कर सकते थे कि किस तरह उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, दैट द दाल दैट इज मिक्स्ड प्रोडक्ट is much tastier, or they are much easier to cook. ठीक है, उसका इंट्रोड्यूस कर सकते थे. ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया तो कुछ गलत किया, but I find it very innovative that you have a creative mind in there. All right,
Now I think कि सबने यहाँ पर कुछ ना कुछ learn किया इस activity से, and that is a very good thing, and that is the most important thing that you learn. ठीक है, learn करने का मतलब है ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए. Understood? Make your slides much better next time. Make your presentation, practice for your presentation. ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए क्लास में, क्लास के बाद आप एक बार प्रैक्टिस करिए. आपके पास इतना अच्छा अवेलेबिलिटी है, यू हैव Zoom installed in your mobile phone. Zoom कॉल करिए अपने फ्रेंड्स को, मेक अ प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस ऑनलाइन. कितना अच्छा अवेलेबिलिटी है. हमारे टाइम में ये चीज नहीं होती थी, हमें कितना दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता था अपने दोस्त के घर पर ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए. यू डोंट हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स. टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज फॉर योर हेल्प ओनली. ठीक है, ऑलराइट. यस, आपका जो इशू है बच्चे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू -5 होगा, लेकिन आपको प्रेजेंट नेक्स्ट डे करना ही करना. ठीक है, विद गुड प्रैक्टिस. ऐसा नहीं कि बस कैसे भी प्रेजेंट कर देना है. आपके पास एक दिन का पूरा ड्यूरेशन है. अच्छे से प्रैक्टिस करिए सबके साथ मिलकर, एंड कोऑपरेट विद योर टीम मेंबर्स. उनके साथ कम्युनिकेट करिए, उनके साथ कोऑपरेट करिए. अगर कोई दिक्कत आ रही है, लेट मी नो प्रायरली, नॉट एट द पॉइंट. प्रायरली जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में आके बताओ. ठीक है, all right. Let's end this session here then.